Hello students, myself Poojavi Prajapati. I welcome you all in Vibrant Science School. I will take science subject. In science, there are 18 chapters. First, nutrition in plants. Second chapter is nutrition in animals. Third, fiber to fabric. Fourth, heat. Fifth, acids, bases and salts. Sixth, physical and chemical changes. Seventh, weather, climate and adaptation of animals to climate. Eighth, wind, storms and cyclones. Ninth, soil. 10th, respiration in organisms. 11th, transportation in animals and plants. 12th, reproduction in plants. 13th, motion and time. 14th, electric current and its effect. 15, light. 16, water, a precious resource. 17, forest, our lifeline. 18, water bodies, wastewater bodies. These are the chapters. Today we will start first nutrition in plants. Little bit we will see. In class 6 you learned that food is essential for living organisms. You also learned that carbohydrate, protein, fats, vitamins and minerals are component of food. फूड बनाने के लिए क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, प्रोटीन्स, fats, vitamins and minerals are component of food. These components of foods are necessary for our bodies are called nutrients. Nutrients जो होते हैं जो अपने हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं. All living organisms require food. सही बात है. कोई whoever the living bodies are, they require food. Plants can make their food themselves. प्लांट्स खुद से फूड बनाते हैं, लेकिन एनिमल्स और ह्यूमंस वो खुद से अपना फूड नहीं बनाते हैं. दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स टू ईट. द ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. हम है खुद खाना नहीं बनाते, हमें प्लांट्स पे आधारित रहना पड़ता है. अब पूजो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड. हम खुद का फूड खुद से नहीं प्रिपेयर करते, एनिमल्स भी खुद प्रिपेयर नहीं करते, लेकिन प्लांट्स है जो खुद का खाना खुद बनाते हैं. कैसे बनाते हैं ये पूजो का क्वेश्चन है. अब वो इसके आगे हम स्टडी करते हैं कि 1.1 है मोड और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स एंड मिनरल्स. The raw materials are present in their surroundings. The nutrients enable living organisms to build their bodies. Thus, you have to keep in mind living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged part of our bodies and provide the energy to carry out life processes. Nutrition is the mode of taking food by organism and its utilization of the body. The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substance is called autotrophic. See, these bold letters are there that you have to write in your notebook. अब देखो नेक्स्ट टर्म आया है ऑटोट्रॉफिक, हिट्रोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स एंड हिट्रोट्रॉप्स. इसमें क्या है कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organisms make food themselves from simple substance is called autotrophic. Auto मतलब self and auto means self and trops means nourishment. Nutrition, therefore the plants are called autotrophs. Autotrophs means जो खुद से खाना बनाएंगे. Those are called autotrophs. Therefore plants are called autotrophs. Plants से खुद से बनाते इसलिए वो autotrophs है. Animals and most of other organisms take it in ready-made food prepared by plant. They are called heterotrophs. Hetero means others. ये दो terms है. What is autotrophs and heterotrophs? तो hetero यानी जो खुद का खाना खुद नहीं बनाते, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं. Those are heterotrophs. अब पहली wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plant do. Now we may ask where the food factories of plants are located, whether food is made in all parts of plant or only certain plants. How do plants obtain raw materials from the surrounding? How do they transport them?
to food factories of the plants. How the see this question is of पहेलीज कि प्लांट्स खाना बना सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है, मिनरल्स होता है, प्लांट्स बना सकते, तो हम क्यों नहीं बना सकते? दैट वी विल सी इन नेक्स्ट lecture. Okay, thank you.